वो बेचता था। हाँ। इसके पास एक सिटी लाइसेंस था, डॉक्टर का लाइसेंस नहीं था। सिटी लाइसेंस था, डॉक्टर का लाइसेंस नहीं था। अच्छा। तो ये एक बार एक शहर में पहुंचा, वहाँ पे कांस्टेबल ने बोला कि तुम अपना लाइसेंस दिखाओ। तो बोला मेरे पास तो सिटी लाइसेंस है, मैं तो ये पोटली बेचता हूँ। तो बोला पोटली नहीं, बिना डॉक्टर की परमिशन के तुम कुछ नहीं कर सकते हो, यहाँ पे एक डॉक्टर है, उससे परमिशन लो। तो उसने कहा था डॉक्टर, तो परमिशन नहीं लोगे तो भैया मुझे तुम्हें बंद करना पड़ेगा। अब क्या हुआ, तो सिटी में एक ही डॉक्टर था। तो अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन क्या हुआ, ये कहता था कि इसका एक स्टेट पेडलर का ऑफिस है। तो ये अगले दिन ये मेयर के ऑफिस में गया, और मेयर के ऑफिस में इसकी एक मुलाकात एक एंडी साहब से हुई। वो भी इस तरीके का कुछ काम करते थे, कोई चीज़ मिला करके मतलब ये पोटली बेचते थे, ड्रग्स नहीं करते थे, उस मामले में शरीफ थे। मेयर साहब आए नहीं थे, है ना। तो ये दोनों कहते हैं हम दोनों साथ साथ कुछ करते हैं, तो दोनों बाहर आए। जब ये होटल पहुंचे तो इनको एक मैसेज आया कि मेयर के तबीयत बहुत ख़राब है, ज़रा तुम आके देखो। तो बोला, इसने बोला देखिए मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, मेरे पास तो एक स्टेल है, मैं पोटली बेचता हूँ। तब भी बोला भैया डॉक्टर तो पता नहीं कहाँ चला गया है, तो मेयर को आके देखो। ठीक है, तो फिर गया, और ये लेकर के पोटली लेकर के पहुंचा, और मेयर के घर गया। देखा कि मेयर का जो है वो लेटा हुआ है, और उसका पेट कस के करा रहा है, उस दर्द से करा रहा है। तो है ना, तो मेयर कहता है मैं मर जाऊंगा, कुछ करो। तो इसने बोला देखिए मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं ये पोटली बेचता हूँ, मुझे कोई मेडिकल डिग्री नहीं है। तो मेयर कहता है कुछ भी करो, तुम कुछ तो कर सकते हो, डॉक्टर तो है नहीं। हाँ, तो अब ये क्या करता है, अब ये कहता है ठीक है तुम कब से बीमार हो। बोला आज सुबह से, और मेरी हालत बहुत पतली है। ठीक है ना, अब यहाँ से मैं कहानी पढ़ रहा हूँ, अब आज ये कहानी ख़त्म कर देंगे, नहीं तो 2-3 में मज़ा नहीं आता। मिस्टर फेडरल says, I raise the window shade a bit, will you? Biddle says the young man, do you feel that you could eat some hangman eggs, Uncle James? अब उस मेयर के साथ उसका भतीजा खड़ा हुआ था। भतीजा कहता आप कुछ हैमर एग्स खा सकते हो। मिस्टर मेयर says, I, after laying my ears on his right shoulder blade and listening, you've got a bad attack of super inflammation of the right clavicle of the हार्सी कॉर्ड। इसने वही काम किया जो अमिताभ बच्चन ने अमर अकबर एंथोनी में किया था, ये ना लंबा फट्टा मारा कि तुम्हें, ये ना, हाँ तुम्हें जो है कि तुम्हें अटैक ऑफ सुपर इन्फ्लेमेशन ऑफ द राइट क्लेविकल ऑफ द हार्सी कॉर्ड। गुड लॉर्ड सेज ही विद द ग्रोन, कांट यू रब समथिंग ऑन इट एंड सेट एनीथिंग। तो मेयर कहता है कुछ तो दबाओ, मेरा मतलब उस पर लगा करके मेरा कुछ सॉल्व तो करो। आई पिक्स अप माई हैट एंड स्टार्ट्स फॉर द डोर। मैंने अपना हैट को पिकअप किया, मैं डोर की तरफ गया। You aren't going, Doc, says Mayor with a howl. You aren't going away and leave me to die with this. Superfluity, superfluity of the clapboards, are you? तो ये इसने अपना हैट लिया और ये बाहर चल दिया। तो मेयर बोलता तुम यहाँ से जा नहीं सकते, है ना, अब तुम्हें डिजीज तो पता लगे, तुम सॉल्व करो। कॉमन ह्यूमैनिटी डॉक्टर हुआ हो, इसने अपना कुछ नाम हुआ रखा था, सेज मिस्टर बिडल, ought to prevent a deserting fellow human being in distress. अरे तुम इस आदमी की जिसकी हालत बहुत खराब है, तुम उसको छोड़ के नहीं जा सकते। मिस्टर मेयर says I, there is only one hope for you. Drugs will do you no good, but there's another power higher yet. Although drugs are high enough, says I. तो बोला देखिए आपके लिए एक ही मतलब एक उपचार है, ड्रग्स से, जो ड्रग्स मतलब मेडिसिन से आपका ज़्यादा फायदा नहीं होगा, एक और ताकत है जिससे आपका सॉल्व हो सकता है। एंड व्हाट इज दैट, सेज ही, scientific demonstration, says I, the triumph of mind over सरसा परेला। कहता है साइंटिफिक मेथड है, दिमाग की विक्ट्री ओवर सारसा परेला। ये भी फट्टा मारा उसने। द बिलीव दैट देर इज नो पेन एंड सिकनेस एक्सेप्ट व्हाट इज प्रोड्यूस व्हेन वी एंट फीलिंग वेल।
मतलब ये कि कोई दर्द वगैरह कुछ नहीं है जब तक कि वो चीज़ प्रोड्यूस होती है जब हम लोग तबीयत खराब नहीं होती है. डिक्लेयर योर सेल्फ इन एरियर्स, डेमोन्स्ट्रेट. दिखाइए दिमाग की ताकत से जो है आपने उसको सॉल्व करिए. What is this paraphernalia you speak of, doc? Says Mayor. You aren't a socialist, are you? तो कहता है ये पैराफेनालिया क्या है, तुम कोई सोशलिस्ट तो नहीं हो ना. मेयर कहता है आई एम स्पीकिंग सेज आई ऑफ द ग्रेट डॉक्ट्रिन ऑफ द psychic financing of the enlightened school of long distance subconscious treatment of fallacies and meningitis of that wonderful indoor magnetism. मैं आपको एक वंडरफुल वो जो है जो पर्सनल मैग्नेटिज्म की स्ट्रेंथ के बारे में बता रहा हूँ. अब आप इसका मीनिंग मत समझिए, आप ये बस समझिए इसके शब्दों का खेल देखिए. King says I have the great doctrine of psychic financing of the enlightened school of long distance subconscious treatment of fallacies and meningitis of that wonderful indoor sport known as personal magnetism. Can you work it, Doc? Asked the mayor. I one of the soul sanhedrims and ostensible hooplas of inner pulpit, says I. मतलब लंबे फट्टे, the lame talk and the blind rubber, whenever I can make it pass at them. I'm a medium, a coloratura, hypnotist, and a spirituous control. It was only through me at the recent seances at Ann Harbor that the late president of Vinegar Bitters Company could revisit the earth to communicate with his sister Jane. अम्मा सुन रही हो कैसे लंबे लंबे इंग्लिश में फट्टे मार रहा है. You see me peddling medicine on the street, says I to the poor. I don't practice personal magnetism on them. I do not drag it in the dust, says I, because they haven't got that dust. Will you treat my case? asked the mayor. जैसे हमारे ढोंगी बाबा होते हैं ना जो इधर चलते हैं वैसा. Listen, says I. I've had a good deal of trouble with medical societies everywhere I've been. देखो मेरी प्रॉब्लम रही है मेडिकल सोसाइटी से. I've been. I don't practice medicine. मैं मेडिसिन तो छोड़ ही चुका हूँ. But to save your life, I'll give you psychic treatment if you'll agree as mayor not to push the license equation. मैं तुम्हें psychic treatment दे सकता हूँ, पर तुम license equation के बारे में मत करो. Of course I will, says I. Now get to work, doc. For them pains are coming on again, and अरे दर्द होता जा रहा है, तुम solve करो problem को. My fee will be $250, cure guaranteed in true treatments, says I. All right, says the mayor. I'll pay it. I guess my life's that worth that much. I sat down by the bed and looked at him straight in the eye. Now, says I, get your mind off the disease. You aren't sick. You haven't got a heart or a clavicle or a funny bone or brains or anything. You haven't got any pain. तुम ये सोचो तुम्हें कोई डिजीज नहीं है, तुम्हें कोई दर्द नहीं है, तुम्हें कोई हार्ट नहीं है, तुम एकदम चंगे हो. Declare error. Now you feel the pain that you didn't have leaving, don't you? I do feel some little bit better. Doc, says the man. Darned if I don't. Now state a few lies about my not having this swelling in my left side, and I think I could be propped out and have some sausage and bucket wheat. I made a few passes with my hand. Now, says I, the inflammation's gone up. दिमाग से सोचो inflammation चला गया. The right lobe of the perineum has subsided. Right lobe perineal जो है नीचे चला गया. You're getting अम्मा ये मत करो अम्मा, ये मत करो प्लीज. तुम पूरी दुनिया की उल्टी सीधी खबरें देख. मामा ये फट्टे मार रहा है इंग्लिश में. ये कह रहा है देखो तुम सोचो कि तुम्हारी कोई डिजीज नहीं है, तुम्हारी राइट लोड और पेरिनियल ठीक होती जा रही है. साइकोलॉजिकल ठीक कर रहा है. You're getting sleepy. You can't hold your eyes open any longer. तुम्हें नींद आ रही तो eyes नहीं कर सकते हो. For the present the disease is checked. Now you are asleep. Okay, करके तुम सो गए. The mayor shut his eyes slowly and began to snore. You observe, Mr. Tiddle, says I, the wonders of modern science. Biddle, says he, when will you give the uncle the rest of the treatment? Dr. Poo Poo. Poo Poo. तो अंकल को ट्रीटमेंट कब दोगे? वाह बू, says I. वाह बू. Poo Poo नहीं, वाह बू. I'll come back at 11 tomorrow. When he wakes up, give him 8 drops of turpentine and 3 pounds of steak. 8 drops of turpentine and 3 drops of steak. Good morning. The next morning, I was back on time.
Well, Mr. Riddle, says I, when he opened the bedroom door, how is uncle this morning? He seems much better, says the young man. The mayor's color and pulse was fine. I gave him another treatment and he said the pain had left him. Now, says I, you'd better stay in bed for a day or two and you'll be all right. It's a good thing I happened to be at Fisher Hill, Mr. Mayor. Says I, for all the remedies in the cornucopia for the regular schools of medicine, you couldn't have saved you. And now that error has flew and pain proved a perjurer, let's allude to the cheerfuler subject. Say the fees of $250. No checks, please. I had to write my name on the back of check almost as bad as I do in the front. I've got the cash here, said the mayor, pulling a pocketbook from under his pillow. He counts out five $50 notes and holds them in his hand. Bring the receipt, he says to Biddle. I signed the receipt, and the mayor handed me the money. I put it inside my pocket carefully. Now do your duties, officer, says the mayor, grinning much unlike a sick man. Mr. Biddle lays his hand on my arm. You are under arrest, Dr. Wu Bu, alas Peter, says he, for practicing medicine without authority under the state law. Who are you, I ask. I tell you who he is, says Mr. Mayor, sitting up in bed. He is a detective employed by the State Medical Society. He's been following you over five counties. Oh, he came to me yesterday and we fixed up this scheme to catch you. I guess you won't do any more doctoring around these parts, Mr. Fakir. What is it that you said I had, doc? The mayor laughs. Compound? Well, it wasn't softening of the brain, I guess, anyway. Oh no, mayor ने फंसा दिया उसको. A detective, says I. Correct, says Dr. Biddle. I'll have to turn you over to the sheriff. Let's see you do it, says I, and I grab Biddle by the throat and half and throws him out of the window. But he pulls a gun and sticks it under my chin and I stand still. Then he puts handcuffs on me and takes the money out of my pocket. I witness, says he, that they are the same bank bill that you and I marked Judge Banks. I'll turn them over to the sheriff when we get over the office and he'll send you a receipt. They'll have to be used as evidence in this case. All right, Mr. Biddle, says the mayor, and now Dr. Wow Wu, he goes on, why don't you demonstrate? Can't you pull the cork off your magnetism with your teeth and hocus pocus them handcuffs off? Come on, officer, says I, dignified. I may as well make the best of it. And then I turns to the old banks and rattle my chains. Mr. Mayor, says I, the time will come soon when you'll believe that personal magnetism is a success. And you'll be sure it succeeded in this case too. And I guess it did. And when we got to the gate, I says, we might meet somebody now, Andy. I reckon you better take them off and hey. Why, of course, it was Andy Tucker. That was his scheme. And that's how we got the capital to go into business together. Arey wow, chatur aadmi.